Hey students, welcome to BBA Simplified by Dr. Venki Sharma. Continuing with Fundamentals of Management Marathon class, we will today talk about evolution of management thoughts. So in today's session, we will explore that how modern management developed through the ideas of Taylor, Fayol and Weber. The three pioneers whose theories shape the way organizations work even today. ये टेलर, फ्योल और वेबर जो है इनका कंट्रीब्यूशन कम्स अंडर वन कैटेगरी दैट इज द क्लासिकल थ्योरीज. सो एज वील मूव फॉरवर्ड वील सी दैट हाउ these classical theories are coming up. Management did not evolve overnight. It grew from experience, experiments, and analysis. So before we begin with the concept, let's first understand that what is management thought. जब भी हम मैनेजमेंट थॉट के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑलवेज रेफर टू एज अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया, उसको एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब एक सिस्टमैटिक स्टडी डेवलप हुई, दैट इज वेयर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैड हैपेंड. जो एवोल्यूशन की हम बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थ्री पायनियर्स, that is Taylor, Fayol and Weber, they come under classical theories. These classical theories. So we are actually going to focus in this entire session onto these classical theories because this is what the part of your BBA syllabus is. So let's have an overview of the classical approach. तो जब हम classical school of thought की बात करते हैं, it emphasizes on four particular things, which is that it talks about that it is management is a concept which is designed and developed by a scientific method. Second thing what it talks about is of the division of work. Third is clear hierarchy and the fourth one is efficiency and control. जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे हमारे इस क्लासिकल अप्रोच के, वो F.W. टेलर था. F.W. टेलर हैड ऑलवेज फोकस्ड ऑन दी साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. सो इसका जो अप्रोच था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ था, वेयर ही हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट एफिशिएंसी थ्रू टास्क एनालिसिस एंड टाइम स्टडीज. टाइमली काम पूरा करोगे, जो आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको पे आउट्स मिलेंगे और वो पे आउट्स ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता था. दिस इज व्हाट द स्कूल ऑफ थॉट और द प्रिंसिपल फॉर F.W. Taylor. Then Henry Fayol's focus was on administrative management. He said that outlining the 5 functions of management, which is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling, and then he had also given the 14 principles of management. तो हेनरी फ्यूल की थ्योरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थी, वो उन्हीं 5 प्रिंसिपल्स और 5 फंक्शंस और 14 प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. देन केम मैक्स वेबर. He had a bureaucratic management style. He advocated for the formal structure with a hierarchy, clear rules and specialized merit-based role. मैक्स वेबर ने कहा कि जब आप हायरार्की पे में ऊपर की तरफ जाते हो, जब आप हायर लेवल पे जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ आती हैं और आपकी जो हायरार्की है, क्लियर हायरार्की है, उसी को ही फॉलो करेंगे बाकी के लोग, राइट. I hope these classical school of thought are understood. One is the scientific method, which was majorly focused by F.W. Taylor. Second was division of work, which was again focused by Henry Fayol. He said कि हमें अपना अपना काम डिवाइड करना है अपने अपने लेवल्स के हिसाब से. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल का अपना काम है, मिडिल लेवल का अपना काम है, लोअर लेवल का अपना काम है. Then Max Weber had focused upon the clear hierarchy. अगर आप hierarchy के ऊपर हो तो आपके रूल्स अलग डिफाइंड हैं, आप hierarchy के नीचे हो तो आपके रूल्स अलग डिफाइंड हैं. And then these 3 things actually were designed and developed for the efficiency and control of the entire function of the organization. I hope इतना हम सबको अभी समझ में आता है. Starting with F.W. Taylor's scientific management concept, we need to understand first thing
दैट जब भी हम किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट या किसी भी थेरिस्ट की बात कर रहे हैं, वी नीड टू राइट डाउन दीज ईयर्स फ्रॉम 1856 to 1915. Also remember that F.W. Taylor was always known as the father of the scientific management. And the core idea that F.W. Taylor had started talking about was on applying science instead of rule of thumb of management. So Taylor believed that workers could be motivated by money, and therefore he promoted the idea of a fair day's pay for a fair day's work concept. अगर वर्कर काम करेगा और अच्छे से काम करेगा तो उसको अच्छा पे आउट मिलेगा, अगर वर्कर काम नहीं करेगा तो उसको उस दिन कोई पे आउट नहीं मिलेगा. So Taylor believed that every job could be analyzed scientifically to determine the best way to do it. And his goal was to achieve efficiency through standardization and cooperation between management and workers. He had then gave certain principles, wherein the very first principle was science and not rule of thumb. F.W. टेलर का मानना था कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एक साइंस लगती है. So that science, when he had talked about, he said that we should replace the rule of thumb method and we should conduct time and motion studies. अब जब time and motion studies क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से motions को, कौन कौन से actions को use किया जाता है और कितना उसमें time लगता है. जब हम ये time और motion study कर लेते हैं, उसके बाद he said that we will then design a standardized tool and equipment to ensure that consistently the same work is happening in a same manner. So this is what he said कि किसी भी काम को करने के लिए rule of thumb की जरूरत नहीं है, एक साइंस की जरूरत है. Then the second principle he had focused upon was harmony, not discord. Taylor said कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज स्पेसिफिकली, अगर हम दो ग्रुप्स की बात करते हैं, सो देयर हैज टू बी अ हार्मनी अमंग द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, सो दैट जब वो कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, जब वो हार्मनी में काम करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, देन इट बिकम्स इजी फॉर अचीविंग द गोल्स दैट एवरीबडी इज वर्किंग फॉर. द थर्ड प्रिंसिपल इज ऑन कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. इस प्रिंसिपल का फोकस था कि कोई भी वर्कर अपने इंडिविजुअल गोल के लिए काम ना करके अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करे, एक कोऑपरेशन के लिए काम करे. और जब भी हम अपना इंडिविजुअलिज्म छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, देन रिजल्ट्स आर ऑलवेज ऑन अ बेटर साइड. The fourth principle said that maximum output and not restricted output. जब वर्कर्स को हम काम देते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए कि उनका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि आज के दिन में आपको 500 यूनिट्स बनानी है, नहीं. They should always be motivated to come out and generate maximum output. And the last principle focused on development of each person's to greatest efficiency. And to develop those greatest efficiency, Henry Fayol said that we should give the training to the workers, we should train them according to their specialization so that we can get the maximum output from the resources. So this was the concept of F.W. Taylor. अब टेलर ने कुछ टेक्निक्स की बात करी थी, जैसे हमने उन प्रिंसिपल्स में भी समझा. ही हैड टॉक्ड अबाउट टाइम स्टडी, ही हैड टॉक्ड अबाउट मोशन स्टडी. टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है और किन किन मोशंस को यूज करके उस काम को किया जाता है. Once these studies are done, then there used to be a standardization of tools and methods. कौन कौन से टूल्स को यूज करके किस मेथड से हमने अपना काम को कंप्लीट किया, वो सारी चीजें सारे वर्कर्स को बता दी जाती थी और फिर उसी के हिसाब से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को हमने आगे फर्दर फ्लोट किया. सो टेलर्स टेक्निक वाज कि जितने पीस वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से पर पीस रेट सिस्टम को डिजाइन कर लो. किसी ने 100 पीस, फॉर एग्जांपल किसी ने 100 यूनिट्स का आउटपुट दिया है, तो 100 यूनिट्स के लिए पे आउट फिक्स कर दिया, लेट्स से 200 रुपीज. सिमिलरली वर्कर बी ने सेम डे सेम टाइम में 150 आउटपुट्स जेनरेट करे हैं, तो उसका पे आउट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होके उसको ज्यादा मिलेगा. सो whosoever will work more will get more payout and whosoever will work less will get less payout. He had this simple funda into his technique.
Right. So we can conclude that Taylor used time and motion studies to set performance standards, and he rewarded workers through through differential wage system, paying more to efficient workers and paying less to non-efficient workers. One example here I would like to give that Taylor principles are often asked in 5 or 10 marks in the examination. Let's now begin with Henry Fayol. Henry Fayol had talked about the administrative management. So what Fayol did, he shifted the focus from the shop floor efficiency to the administrative efficiency. उसके हिसाब से हमें सिर्फ वर्कर्स को फोकस नहीं करना था, हमको सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को फोकस करना था. And that is why he outlined functions and principles that apply to every level of management, from CEO to supervisors. Henry Fayol administrative management theory is a framework for managing organizations that focuses on the structure and behavior of the management, and it is then finally based upon the 5 functions which were given by Henry Fayol. And what were those 5 functions? Planning, organizing, commanding or directing, coordinating and controlling. So these 5 functions were the most important concepts given by Henry Fayol, and along with these 5 functions he had also contributed by developing 14 principles of management. We will be talking about these principles of management in the coming slides. Before that, let's understand that what is planning, organizing, commanding, directing and controlling. So when we talk about planning, it is nothing but it is setting the organizational goal and creating action plans to achieve them. एक बार हमारे पास गोल डिजाइन हो जाते हैं तो it becomes easy for everyone else to work on to those goals. Then comes organizing. Organizing का क्या मतलब हुआ कि हमें organization का एक structure डिजाइन करना है. उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर मीन्स नथिंग बट द डिफरेंट डेजिग्नेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन दोज डेजिग्नेशंस और दोज स्ट्रक्चर्स नीड टू बी एलोकेटेड बाय द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल एंड मटेरियल. जो भी जिस भी डेजिग्नेशन पे कौन काम करेगा और किस किस अथॉरिटी और मटेरियल के साथ काम करेगा, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कमांडिंग और डायरेक्टिंग. इसको डायरेक्टिंग भी कहते हैं. जनरली हम लोग अपने टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे तो हम ऐसे ही बोलते थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऐसे याद हुआ करते थे ये हमको, right? So now this commanding is also one of the word that is used for it. So do not get confused into commanding and directing. This means the same. So directing is leading and motivating employees to perform their task effectively. प्लान हमने कर लिया है, हमने designations divide कर दी हैं, उसके हिसाब से अब हमें सबको task देने हैं so that employees can work according to their tasks. Then comes coordinating. Of course, we need to ensure that activities are aligned and are worked upon across the different departments in a harmonious manner. That is what the meaning of coordinating is. Finally comes controlling. Controlling में थोड़ा सा students confused हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी. Whatever we had done at the time of planning, organizing, commanding and coordinating, हम controlling के time पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं किसी को, बट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड देन टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस इन केस प्रोग्रेस हमारी डेविएट कर रही है एज कंपेयर टू आवर प्लान्स. सो व्हाट वी नीड टू डू इज अंडर द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग वी नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शंस whenever needed to ensure that the objectives or the plans that we had decided are met well on time as per the plans. Right? Now let's try and understand the 14 principles of management. Fayol has provided this complete guide to organizational management, from maintaining discipline and unity to encouraging teamwork and initiative. These principles are timeless and still form the base of today's management practices. आज की डेट में भी जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करती हैं, they come from this basis of those 14 principles of management. Let's learn these 14 principles and understand that what are the meaning of these 14 principles. Let's begin with the first one, that is division of work. Specialized task होते हैं, उन tasks को हर एक एम्प्लॉय की स्पेशलिटी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए स्पेशलाइजेज इन
coding. Employee B specializes in completing the project. Employee C specializes in managing the entire project. So जो जिसकी speciality है उसके हिसाब से उसको work divide करो, so that ultimately we are able to increase the efficiency of the workers and generate the required output, right? Second one is authority and responsibility. Now these managers have the right to give orders to everybody, which must be balanced with their responsibility for the outcome. हर एक मैनेजर की डेजिग्नेशन के हिसाब से उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे हैव अ राइट दैट दे कैन ऑर्डर टू द एम्प्लॉयज, दे कैन गिव ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉयज, and the purpose behind giving the orders should be nothing but completion of the task. Third principle talks about discipline, a very very important principle even in a daily life. It is not only important for the organization. हम लोगों की general life के लिए भी discipline is one of the most important principle. It has to be. So discipline is nothing but it talks about that employees whosoever are working in the organization, they must be obedient and respectful of all the rules that are followed within the organization. Okay? Next is unity of command. Now unity of command और unity of direction में generally confusion होता है, so please understand it in a better way. Unity of command says that each employee should report to only one superior to avoid confusion. Confusion ना हो इसीलिए हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा. जब भी डुअल रिपोर्टिंग होगी तो कंफ्यूजन होगा. सो दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ कमांड इज. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Now this unity of direction states that all the activities performed by the employee with the same objective should be guided by a single plan and one manager. Employee को भी जो directions मिलने चाहिए वो एक ही जने से मिलने चाहिए. So the difference is when we talk about unity of command, if I am an employee, I should report of whatever I am doing to only one boss. And when I'm talking about unity of direction, I'm saying the other way around, that I should get all the directions of whatever I have to do from one boss. So this is what the difference between unity of command and unity of direction is. The sixth principle is subordination of individual interest. Of course. So interest, the goals of the organization should take the precedence over the goals of any one employee or a group. We need to preside our own individual interest and give importance to the organization's objectives or the interest. Next one is remuneration, which says that employee should be fairly compensated. जो जिसका level है, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से उनको उनका remuneration या compensation मिलना चाहिए. Simple. Next is centralization and decentralization. Centralization का मतलब होता है कि एक ही the degree of centralization, एक ही जगह से सारे commands का जाना. Decentralization का मतलब होता है that you make different departments and different departments will decide the commands and the directions. So the degree of centralization should be based on the specific need of the organization, कि वो अपनी organization में centralization रख के ज़्यादा better काम कर सकते हैं या decentralization रख के ज़्यादा better काम कर सकते हैं. कितना degree of centralization होना चाहिए. Centralization means nothing but when all the commands goes from single point, that is centralization. Next is scalar chain. Now scalar chain says that there has to be a clear hierarchical line of authority that should run from top to bottom. बिल्कुल clear hierarchical line होनी चाहिए और उसका flow from top to bottom होना चाहिए. The top management would do the planning, communicate it to the middle level management, and middle level then further communicate it to the bottom level. That is what the meaning of scalar chain is. Next principle is order, where we say that everything and everyone should be in their proper place to ensure efficiency. हर चीज अपने अपनी order के हिसाब से होना चाहिए. First thing should come first. That's it. Next principle is equity. We understand that we should treat each and every employee in the organization with equity. All the employees should be treated with kindness and fairness. जब इक्विटी होती है तो हार्मनी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करती है.
Then is stability of tenure. It talks about the employees working in the organization. हमारा जो turnover rate है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Employees who join the organization should remain in the organization for a longer duration. So there has to be a stability of the tenure. Here tenure is nothing but the tenure of an employee working in an organization. कितना time period के लिए कौन सा employee काम कर रहा है organization में. It has to be stable rather than more turnover. Next is initiative. We say that employees should be encouraged to take initiative and be creative in the organization. जितना initiative employees लेंगे, जितना creative वो होंगे, उतना ही ज़्यादा efficiency और productivity increase होगी. And the final one is aspiratory corps. इसको याद करने के लिए थोड़ा सा students hitch करते हैं, but इसको याद करना is very simple. When we see this aspiratory corps, take the hint from this word and just remember this word spirit. जब इस word को याद करोगे तो तुम्हें इसका meaning भी समझ में आएगा. Wherein we say that it is nothing but it is fostering a sense of team spirit and unity among employees, which is very, very crucial for any of the organization to work. So this is how we are learning aspiratory corps. So these are the 14 principles of management given by Henry Fayol. We'll now move on to Max Weber's concept. Max Weber talks about a bureaucratic style. He had proposed that an organization should function like a well-defined machine. कैसे? The authority should flow systematically, roles should be clear, and rules should guide every process in the organization. उसके ideas बहुत clear थे. He said that जो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एम्प्लॉय जहाँ जहाँ पे है उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए और हर एम्प्लॉय और वर्कर को उसको फॉलो करना चाहिए. सो वेयर पावर कम्स फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड द पोजीशन इटसेल्फ, not from the personal connection. That is what the concept given by Max Weber. He was a German sociologist and he was known for the theory of bureaucracy. Now his theory had certain key features. The very first feature was formal hierarchy of authority. He had talked about or he had focused on the structure of the organization. एक formal hierarchy follow होगी जिसमें top level, middle level और bottom level होगा. जो lower level है वो top level पे directly नहीं जा सकता. The lower level should only communicate to the middle level and middle level should be playing a role of a mediator between top level and lower level. So he had strictly focused upon a formal hierarchy of authority. Then he said that in every organization there should be some rules and regulations that needs to be followed by each and every employee. Then he had talked about impersonality in decision making. जब भी decision making होगा तो वो हमेशा कहाँ पे होगा? Top level पे होगा. और उस top level पे जब decision making हो रहा है तो उसमें कोई भी biasness नहीं होनी चाहिए. Next is merit based selection and promotion. किसी भी employee का organization में जब भी selection होगा या promotion होगा, it should always be on the basis of the merit. जो जितना अच्छा है उसको उसके हिसाब से, उसकी efficiency के हिसाब से, उसकी productivity के हिसाब से, उसकी merits के हिसाब से, उसकी qualification के हिसाब से उसका selection और promotion होगा. And the final one was the division of labor. Division of labor is nothing but it says that every hierarchy should in the organization should have the number of labor as per their qualification. So the division of work needs to be done on the basis of the formal hierarchy in the organization. This was the concept given by Max Weber and we also call it a bureaucratic management. Now there are certain advantages and disadvantages of it before I come on to the comparison of Taylor versus Fayol versus Webner. So the important advantage of these concepts are that it has increased efficiency, consistency, predictability and fairness of removing the personal biases. We are here talking about the Webner's advantages. And there was one disadvantage of this Weber's concept, which was it can be rigid, it can be inflexible, and it can be resistant to change. Now coming on to the comparison of Taylor versus Fayol versus Weber, again a very important question that generally comes in the examination.
You need to remember these 4 aspects. First is focus, next is level, third is method, and the fourth one is keyword. So when we talk about focus, Taylor had always focused on the shop floor efficiency. उसका focus सिर्फ workers के ऊपर था कि इतना worker काम करेगा तो उसका इतना payout होगा, कम काम करेगा तो कम payout होगा. As compared to Taylor, Fayol had focused upon the administrative principles and Weber has focused on the organizational structure, the hierarchies, top level, middle level and the lower level. Now, when we talk about levels of these 3 theorists, Taylor had focused on the operational level employees. Fayol के principles आए थे managerial level के लिए और Weber के जो features थे वो institutional level पे थे. Then when we talk about methods, Taylor had used method of observation and experiment कि आप देखो, आप सीखो और आप अपने आप को improve करो with the help of time study and motion study. Fayol had focused on experience and logic. जैसे जैसे आपको experience होता जाएगा, आप अपने logics लगाते रहेंगे और आपकी work में efficiency आती रहेगी. Weber had focused on sociology and rules. He said that there has to be set of rules that need to be followed by everyone. Now there are keywords that were used by different theorists. Taylor had used a keyword efficiency, Fayol had used a keyword administration, and Weber had always focused on authority. So this table we can actually make in our answer sheet and we can further explain and elaborate these comparisons to score good marks. अब हम क्लासिकल थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, राइट? क्लासिकल थ्योरी ने ओवर एम्फसाइज किया है रूल्स और हायरार्कीज को. इन्होंने जो फोकस किया वो सिर्फ ये किया कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करो और हायरार्की को फॉलो करो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. बट क्लासिकल थ्योरी ने निग्लेक्ट किया ह्यूमन और सोशल नीड्स को. ऐसा नहीं होता है ना कि अगर हम टाइम स्टडी और मोशन स्टडी की बात करते हैं कि इस काम को करने के लिए 4 एक्शंस की जरूरत होगी, हर कोई 4 एक्शन में उस काम को नहीं करेगा. हो सकता है कोई 2 एक्शन में कंप्लीट कर दे, हो सकता है किसी को 6 एक्शंस की जरूरत हो. सो दे हैड एक्चुअली एंड एब्सोल्युटली निग्लेक्टेड ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. देन when we talk about human and social need, we should also focus upon कि as a human we need to rest also. Then there are social needs that we need to sit together, team building activities, थोड़ा बैठ के चाय पी लें, थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लें, उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया. नेक्स्ट लिमिटेशन वाज दैट इट इज़ वेरी रिजिड एंड इट हैड अ मैकेनिकल अप्रोच. जैसे हम मशीन्स के ऊपर काम करते हैं, ऐसे ऐसे ABCD फीड कर दो और मशीन ABCD के हिसाब से काम करेगी, बट ऐसा नहीं होता है. वी आर अल्टीमेटली वर्किंग विद द ह्यूमन बीइंग्स. एंड फाइनली we see that it is not suitable for the dynamic environment. We see that the environment is changing, technologies are coming up, economy is changing, human requirements, people requirement, organizational needs, they all are changing. So these classical theory are actually not suitable for the dynamic environment yet. Even after having these disadvantages, we must always remember that these 3 theorists have only created a base for the entire management concepts. So remember this comparison, right? And these limitations and these comparisons, it is a guaranteed question that generally comes in the examination. Let's summarize whatever we have learned today. We said that Taylor had given the scientific management and he had focused on efficiency. Fayol had talked about administrative management. He had given 14 principles, and Weber had focused on bureaucratic management and he had always focused on the structure in the organization. And there is this one question which generally, a very common question which generally comes under 10 marks, which is explain the contribution of Taylor, Fayol and Weber to management thought. So great work completing this unit. In the next video we'll study how planning and process of decision making is understood. Coming on to the next unit. Don't forget to like, share and subscribe to BBA Simplified. Let's keep learning smart and scoring better. Thank you everyone.